Hi, welcome to today's video. This is Anik Mitra, and today I'm going to discuss a very niche area, which is contract manufacturing. It's not related to one particular sector. Rather, इससे पहले हम लोग जो डिस्कस किया है, it was focused to a particular sector. मगर today, the contract manufacturing is such a topic which is not confined within one particular sector. It's a niche area, and it has its spread from agrochemical to pharmaceutical sector. So we will discuss this today. And just before that, I would like to inform you that I have started a WhatsApp group which gives you all the updates related to the market, the current updates. It's not only a blank news which you can get in the newspaper. It's sort of news analysis which is actually needed to interpret or take decisions. It's absolutely free of cost at this point in time, and I will share the link of that particular WhatsApp group in the video. So people who are interested to get the market update absolutely free of cost, rather it's a market analysis free of cost, you can join this particular link. So let's start. Contract manufacturing. क्या होता है contract manufacturing? In layman's language, आप पतंजलि स्टोर जाते हो, आपके आसपास में पतंजलि स्टोर है, तो ऑब्वियसली यू हैव विजिटेड द स्टोर. तो वहां पे जो ग्रोसरीज बिकता है, डज पतंजलि मैन्युफैक्चर दोज प्रोडक्ट्स इन हाउस? नहीं. So some other companies, many companies rather, manufacture the products on behalf of Patanjali. So it's a contract manufacturing for Patanjali. ऐसा बहुत सारा चीजें देखने को मिलता है. ये आपको कैपिटल गुड्स से लेके एफएमसीजी तक, एग्रोकेमिकल से लेके फार्मा तक सब जगह दिखेगा. मान लीजिए कि आप होशियरी सेक्टर में जाओगे. होशियरी कंपनीज आर फोकसिंग इनटू वूलन प्रोडक्ट्स. मोंटे कार्लो देख लीजिए. मोंटे कार्लो जो कुछ वूलन गारमेंट्स जो सेल करता है मार्केट में अंडर देयर ब्रांड, देयर दोज आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस बाय मोंटे कार्लो. वैसा जो होशियरी सेक्टर कंपनीज के बारे में बोल रहा है, जो वुलन गारमेंट्स they had started selling under the brand, or let's say they have started branding recent past. तो वो जो है सारा मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड, उसका वेंडर होता है जो मैन्युफैक्चर करता है, और कंपनी अपना स्टैंप मार के बेचता है. दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. और एक एग्जांपल, Sera Sanitaryware. I had a detailed work and model in this particular company, Sera Sanitaryware. I have covered the company in detail, spoken to the management several times. तो ये जो Sera Sanitaryware का जो मास्क के लिए जो SKUs होता है, उसका एक सर्टेन पोर्शन आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है. दे हैव सर्टेन वेंडर्स, वो उसके लिए सेरा के लिए मैन्युफैक्चर करता है. सेरा पुट देयर ब्रांड नेम ओवर देयर एंड सेल इट इन द मार्केट. ठीक है. जो हायर एंड एसकेयूज होता है वो मैक्सिमम उसका इन हाउस होता है, क्योंकि हम लोग देखा है फॉर इयर्स दे आर sanitary ware products and faucet ware products were running more than 100% capacity utilization. ये हम लोग देखा है. Still, like they have continued posting very good numbers. We have seen 110% capacity utilization quarter after quarter, 102%, 105%, 110% capacity utilization throughout the year. The reason behind why they could maintain the volume, maintain the SKUs, number of products, that is because of the fact कि उसका वेंडर से जो उनके बिहाफ में मैन्युफैक्चर करते हैं, they have set certain criteria. तो criteria companies representatives are present in the site and they keep on observing all the developments, the manufacturing process, everything, and finally the product comes out from some other facilities who are basically a different company altogether.
हो सकता है कोई छोटा मोटा वेंडर हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, कोई लिमिटेड कंपनी, जो भी है, ठीक है, दो दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मगर वो इसके बिहाफ में मैन्युफैक्चर करता है एंड कंपनी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। तो आता है, कंपनी उसके सील लगाता है, सेल करता है, दैट्स इट। तो आवर टुडेज फोकस इज एग्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल सेगमेंट विथ स्पेशल फोकस इन एग्रोकेमिकल। ठीक है, एग्रोकेमिकल खास तौर पे इसलिए कि वी आर इन द यू नो खरीफ सीजन, this kharif season, and last 1 year, past 1 year was very bad. Entire FY24 was very bad for agrochemical companies, right? Like throughout the globe. इंडिया में एक टाइप का प्रॉब्लम था, ग्लोबली दूसरा टाइप का प्रॉब्लम है। तो वट एवर इट इज, तो एग्रोकेमिकल स्पेसिफिकली आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑल टुगेदर। मगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, where is the cream lies in contract manufacturing, that we will discuss today। और काफी इंटरेस्ट है, खास तौर पे आजकल जो बहुत ज्यादा क्वेरीज मिल रहा है, कंपनीज मैनेजमेंट्स बोल रहा है कि वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेरीज फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, जो उनका इन हाउस मतलब रेस्पेक्टिव कंपनी इन हाउस डेवलप कर सकता है, जिसका वो फैसिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उनके पास काफी सारा क्वेरीज आ रहा है, और खास तौर पे जो क्वेरीज आ रहा है, मोस्टली दोज आर फ्रॉम जापान। अब क्या हुआ है, लेट मी टेल यू, यूरोप एंड यूएस आर द की मैन्युफैक्चरर फॉर दोज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली हाई एंड प्रोडक्ट्स, हाई एंड मॉलिक्यूल्स। अब यूरोप में देयर आर प्रॉब्लम्स, cost has gone up like anything. Energy costs are still on the higher side compared to what it used to be before US Ukraine Russia Ukraine war। तो कॉस्ट काफी एस्केलेटेड है यूरोप में। उसके ऊपर ओवरऑल जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, आप एक साइंटिस्ट का कॉस्ट, आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल जहां पे बोल रहा है कि एक साइंटिस्ट हु इज पेड $30,000 in Indian context, the same scientist gets $180,000। Can you imagine 30,000 against 180,000 in US? So that sort of disparity is there. So that makes your entire manufacturing cost very high। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑल्दो यूरोप एंड यूएस आर द लाइक यूज्ड टू बी द वेरी key destinations because of their high-end facilities, high-end capabilities and capacities, मगर that is gradually shifting due to the cost advantage in Asia। अब एशिया का बात आता है तो चाइना इज द फर्स्ट प्लेयर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, एंड नेक्स्ट वन इज इंडिया। मगर काफी सालों से, मतलब लास्ट मतलब पोस्ट कोविड यही चल रहा है कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ठीक है, and India is having a clear-cut advantage due to the cost factor, cost advantage even above China। अब लोग बोलता है कि भाई चाइना का तो कॉस्ट एडवांटेज काफी है, हम लोग सुना है। बिल्कुल नहीं, बेसिकली चाइना का कॉस्ट एडवांटेज इसलिए है, चाइनीज कंपनीज आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एट देयर थ्रू अवे प्राइस, जिसमें सारा कॉस्ट इंडिया से कम नहीं है, मगर इट इज द, एंड दे आर मेकिंग बेसिकली लॉस। इट इज द गवर्नमेंट इंसेंटिव्स which help them to sell their products below their cost prices, and that is the unfair practice of China by giving lots of incentives। और इसके वजह से चाइनीज कंपनीज आर स्प्रेड, और चाइनीज प्रोडक्ट्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द ग्लोब। दैट इज द रीजन बिहाइंड। अब इंडिया के बारे में बोलता है तो इंडिया इज द चीपेस्ट डेस्टिनेशन इन दैट रिगार्ड। अब चाइना का और एक प्रॉब्लम है, लेट मी टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम विद चाइना। चाइना इज मैनेजिंग देयर IPs, means intellectual properties, horribly। they do not have any ethics। so all the IPs get violated in China very easily, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू, तो आपको आपका टेक्नोलॉजी मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ऑन दैट बेसिस आई विल बी मैन्युफैक्चरिंग, तो ही होता है टाई अप। मगर चाइना इज हॉरिबल इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रिटी, in terms of the quality, in terms of their क्या बोलेगा कि IP standard what they maintain, means they violate everything।
उन आप सभी को मालूम है कि उस उनके पास एप्पल से गूगल तक का सबका कॉपी कैट है। तो इसका कॉपी कैट बनाने में आईपी इज वेरी बैडली वायलेटेड, एंड दैट्स व्हाई companies from the globe are gradually deflecting from China, because the way China has shown their uh, ethics and the mindset Chinese people or Chinese companies have shown to the globe, it is not giving a good, it's not a trusted factor actually. So that's why number one, India has cost advantage. IP is strictly maintained in India. There is no scope of any infringement, any violation of uh, your intellectual property. So people are very much safe. People are very much safe. Sorry, uh, maintaining like with their products and their process, everything with their IP, everything. So there is large number of queries coming throughout the globe to all the players who have their capacity. आज हम इसके बारे में डिस्कस करें कि कौन सा कंपनी, किस टाइप का ऑर्डर्स, क्या चल रहा है। तो दैट आई विल ट्राई टू हैव सम फोकस इनटू इट। तो वेरी इंटरेस्टिंगली, if we as I mentioned, like our main focus is going to be agrochemical and pharmaceutical now, and obviously की फोकस इनटू एग्रोकेमिकल। तो फार्मास्यूटिकल में क्या होता है, फार्मास्यूटिकल में देयर आर 4 stages ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। ठीक है, it starts with discovery, then preclinical, then clinical, and then it goes to the market approval to the regulator। ठीक है, there are 4 stages। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी जब फार्मास्यूटिकल्स का बात आता है तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी देयर आर 2 टाइप्स। एक, एज आई टोल्ड, ड्रग डेवलपमेंट। ठीक है, उसका कोई एक ड्रग जो R&D में गया है, तो R&D करता है, एक कंपनी है हु डज R&D फॉर द पेरेंट कंपनी। आई वुड नॉट से पेरेंट, फॉर द की ब्रांडिंग, मतलब जिसका ब्रांडिंग है उसके बिहाफ में R&D करेगा। ठीक है, तो दिस इज वन प्रोसेस। अनदर वन प्रोसेस इज, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास प्रोसेस अप्रूवल है, प्रोसेस का अप्रूवल मिलना चाहिए। तो रेगुलेटरी अप्रूवल इज देयर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, एंड आई ट्रांसफर द अप्रूवल, ट्रांसफर द प्रोसेस, द टेक्नोलॉजी, द प्रोसेस। जस्ट अ मोमेंट। तो I transfer that process to the contract manufacturer, and contract manufacturer blindly manufactures those, maintaining the whatever the guideline is there, maintaining those guidelines, they manufacture the product. So these two process. So I made one company, one management in, I think, 2019, who is basically a drug developer, contract manufacturer, drug developer, means an R&D company of pharmaceutical। 5 years back, 2019 में हम मिला था in Hyderabad। I get to understand how these things are very complicated। कैसे कैसा होता है, मतलब यू वेरी डिफिकल्ट टू इस कंपनीज का कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब इट स्टार्ट्स विद डिस्कवरी। तो होता है कि डिस्कवरी कंपनी एंड में, की कंपनी एंड में होता है, देन दे for preclinical and clinical stage, they ask the contract manufacturer to do the process। तो डिस्कवरी में मान लो कि कंपनी एक्स जो जिसका ब्रांड होगा, तो उनके उनके इन हाउस ड्रग डिस्कवरी हुआ है, उसके बाद प्री क्लिनिकल क्लिनिकल स्टेज में स्टेज के लिए वो R&D के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को दिया है। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से हम मिला था इन 2019 इन हैदराबाद। तो ये सब कंपनीज का मतलब यू कांट डू QOQ मतलब क्वार्टर क्वार्टर आप उसका रिजल्ट देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इवन ईयर ऑन ईयर में भी प्रॉब्लम है, इन सेंस में कि आप फुल ईयर एक साथ देखोगे तो स्टिल इट्स बेटर। क्योंकि ये सब कंपनीज का देखिए, जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यूज आता है, जो उन लोग का बेनिफिट है, दैट कम्स इन माइलस्टोन।
अचीविंग सर्टेन माइलस्टोन्स, मान लो कि प्री क्लिनिकल, देयर आर नो टाइम फ्रेम्स, अगेन दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, किसी का 1 साल लगता है, किसी चीज का प्री क्लिनिकल में हो सकता है 6 साल लग गया। सो दोज आर चैलेंजेस, ठीक है, फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनीज। तो इतना लंबा टाइम अगर लग जाता है तो यू डू नॉट हैव एनी एडिशनल इंसेंटिव। आप क्या कर रहे हो कि आपका कॉस्ट आपको निकल रहा है, कंपनी इज एलोकेटिंग यू कॉस्ट, तो कॉस्ट निकल रहा है, देर इज नो इंसेंटिव ऐसा कंपनीज का इस सेंस में। मगर इन लोग का बेनिफिट कब आता है कि सक्सेसफुली अचीविंग सर्टेन स्टेज, मान लो कि प्री क्लिनिकल का अप्रूवल आया है, प्री क्लिनिकल का कुछ सक्सेस आया है, then it will go to, so it's an achievement of a particular goal. So achieving certain goal you will get a milestone payment, तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिट होता है, चंक ऑफ पेमेंट उनको मिल गया, तो दैट इज अ प्लस। तो ऐसे रन होता है वो कंपनीज, मगर वेरी डिफिकल्ट टू फैक्टर इन, क्योंकि प्रेडिक्टिंग दिस थिंग्स इज वेरी डिफिकल्ट। लाइक बीइंग एन एनालिस्ट वी कांट प्रेडिक्ट लाइक कब तक वो प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल में आएगा, क्लिनिकल में कितना हो सकता है कि मान लो कि प्री क्लिनिकल में अप्रूवल आ गया, प्री क्लिनिकल इज एब्सोल्युटली फाइन, उसके बाद क्लिनिकल में क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स के ऊपर वो टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग का रिजल्ट हो सकता है सर्टेन लोगों के लिए, सारा नहीं, मान लो कि 40% 50% के लिए रिजल्ट में कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिला, रिजल्ट सही है मगर रिजल्ट में कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स देखने को मिला, इट विल गो बैक टू प्री क्लिनिकल वंस अगेन, मतलब इसमें अब फिर वापस से कुछ कॉम्बिनेशंस पर चेंजेस कुछ जरूरी पड़ता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक और लेट्स से टू एनालाइज दोस काइंड ऑफ और लेट्स से प्रेडिक्ट दैट काइंड ऑफ कंपनीज। तो फाइन, so this is pharmaceutical. Contract manufacturing, my main focus, I said, that is agrochemical. I will discuss today 3 companies. I will try to give you some clue on 3 companies. Obviously, don't take it as a buy, sell, hold recommendation. I do not have any recommendation. It's just knowledge sharing. ठीक है, तो let me tell you in this regard. Agrochemical में there are just a moment, sorry. Okay, so there are 19 products, 19 agrochemical molecules which are going off patent in between 2023 to 2028, 19 molecules, उसमें से 11 fungicides, 4 herbicides and 4 insecticides, ठीक है। तो कुल मिला के 19 products going off patent by 2028 and by 2030 another 3, so total 22 products are going off patent in 2030। अब off patent, I hope आप certain percentage of people understand what is off patent and patented medicines। तो क्या होता है कि पेटेंटेड मेडिसिन मतलब होता है और पेटेंटेड मॉलिक्यूल मतलब होता है कि द मैन्युफैक्चरर विल हैव सोल्ड राइट टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दे विल आल्सो हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू सेट द प्राइस। उसमें गवर्नमेंट और कोई बॉडी कंट्रोल करने के लिए नहीं आता है एंड अदर पीपल आल्सो कैन नॉट कॉपी कैट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज पेटेंटेड प्रोडक्ट, पेटेंटेड केमिकल एग्रोकेमिकल्स, मतलब फार्मा में भी सेम ही होता है। तो ऑफ पेटेंट को तो दे गिव्स दिस राइट, क्योंकि देखो प्री क्लिनिकल क्लिनिकल ये सब फेजेस में ड्रग डेवलपमेंट में टेक्स लॉन्ग, क्वाइट लॉन्ग, मतलब 6-7 साल लग जाता है, उससे भी ज्यादा लग सकता है। So there is no incentive. Companies are spending money after mainly after the employee cost for this type of development, जिसमें आपका साइंटिस्ट का कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है और एडिशनल कॉस्ट एक्सेट्रा होता है। तो कुल मिला के आपका मटेरियल कॉस्ट वगैरह जो वो नॉमिनल होता है, तो कुल मिला के अदर एक्सपेंसेस भी होता है, तो कुल मिला के देयर आर सर्टेन कॉस्ट्स इन्वॉल्व ओवर देयर एंड दैट कॉस्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट, दैट दोस कॉस्ट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो इतना कॉस्ट आप बेयर करते हो, देयर आर नो इंसेंटिव्स, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फॉर दो 6-7 years फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेगमेंट और दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो कंपनीज क्या करता है, आपको एक वो देता है, क्या बोलता है कि गवर्नमेंट आपको जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, गेट्स अप्रूवल, देन इट गिव्स यू सोल्ड राइट टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट, जिसका कोई कॉपी कैट बना नहीं सकता।
So that is an advantage, right? So for that particular company, and they charge obviously on the higher side. तो जो पेटेंटेड मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, दोज आर वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो नेचुरली क्या होता है कि उसका जो कॉस्ट, ये 6 साल 8 साल जो डेवलपमेंट का जो कॉस्ट था, वो कॉस्ट वो निकाल लेता है उससे। सो दैट space is given to the manufacturer by the government in every country. तो वो एक सर्टेन पीरियड के लिए आपका पेटेंट लाइव होता है। मान लो कि पेटेंट आपको 3 साल के लिए पेटेंट अप्रूव अप्रूव हुआ, वो बेसिकली 3 साल नहीं होते, मिनिमम 10 ईयर्स होता है। तो 10 ईयर्स के लिए अप्रूवल मिला, तो उसके बाद व्हेन इट विल गो ऑफ पेटेंट, मतलब उसका पेटेंट खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, देन अदर पीपल कैन पार्टिसिपेट एंड मैन्युफैक्चर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि उसका फॉर्मूला तो सबके पास ही होता है। मतलब वंस इट इज विद द रेगुलेटर, मतलब सबके पास ही वो अवेलेबल होता है, तो देन अदर पीपल कैन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। जो बाकी कंपनीज है जो डेवलप किया, वो तो आपका सोल डेवलपर हो गया। बाकी कंपनीज जो उस प्रोडक्ट को कॉपी कर रहे हैं, दे आर द जेनेरिक प्लेयर्स। एंड इंडिया इज वेरी फेमस फॉर जेनेरिक मेडिसिन ग्लोबली, ठीक है। यूएस का जो मार्केट, यूएस मार्केट है, उसका एक सिग्निफिकेंट supplier of generic medicine is India. Generic medicine is very cost effective compared to patented drugs. So, and US, that's why Indian manufacturers are holding a very big market share in US. As simple as that. Now the thing is, agrochemical का बात कर रहे हैं। Agrochemical में, as I told, certain 22 products are going off patent by 2030. So, as India is a generic player in pharma as well as in agrochemical, so this is an opportunity. This is a big opportunity. तो जैसे इस पर्टिकुलर सेगमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम लोग क्रैम्स बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, क्रैम्स, CRAMS। एंड उसको CDMO भी बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो कंपनीज उसको बनाता है, CDMOs, ठीक है। तो माय फोकस हियर विल बी 3 कंपनीज, जिसमें in agrochemical segment I will start with one very known name, that is Rallis India. Rallis India का एक certain small amount of revenue they earn from the contract manufacturing business. So they are basically manufacturer of one particular product called PEKK, PE. So this particular product, they are the contract manufacturer for certain company, certain brand in Japan. तो उसका manufacturing, it was stalled for like couple of years during COVID. उसके बाद Q4 FY23, Q4 FY23, मतलब last year, last to last year, we are already at the beginning of Q1 FY25. तो Q4 FY24 जस्ट खत्म हुआ है, आई एम रेफरिंग Q4 FY23, ठीक है। तो मार्च 23 क्वार्टर का जो आपका सप्लाई था, लाइक रैलीज गॉट द सप्लाई इन लाइक आफ्टर 2 years of stalled manufacturing, रैलीज का ओपी के सप्लाई हुआ Q4 FY23। तो दिस इज अ सिल्वर लाइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज फर्दर रिवाइविंग। नाउ रैलिस इज सेइंग, आपको मालूम है कि रैलिस हैव स्टार्टेड देयर मल्टीपर्पज प्लांट लास्ट ईयर। तो रैलिस जो बोल रहा है कि दे आर गेटिंग वेरी गुड क्वेरीज एंड they will be manufacturing technical those technical products for the Japanese innovator from their multi-purpose plant, and also yes, from their multi-purpose plant in and also from the chemical zone of Dahej, ठीक है। This is Rallis India. So management said queries are on the higher side, all those stuff.
So those are all silver lining for Rallis India. But please don't take it as a buy, sell, hold recommendation just because contract manufacturing का contribution काफी कम है. If you consider the whole Rallis India, इसका जो contribution है very small, significant. बहुत major कुछ हो जाता है तो overall performance में hardly कुछ impact आएगा इस type का. So naturally, it's not logical also take a call, and I do not have any motive to give any recommendation in this particular platform. So it's not a buy, sell, hold recommendation once again. So next company what I will be discussing, this is called PI India. Again, this is also not a buy, sell, hold recommendation. PI India Limited is basically having a different business model altogether. What is that business model? This business model is basically, they are basically contract manufacturers. The large number, almost the whole revenue of the company comes from this contract manufacturing. This larger chunk comes from the agrochemical, and they have started getting into they are getting into pharmaceutical domain also, and it started giving some small revenue as well. तो PI Industries का जो problem है, one problem I will be telling you, that is their concentration risk is very high. 10 products contributes, means 10 products, 10 molecules contribute 80% of their revenue. तो एक प्रोडक्ट का इधर उधर हो गया तो दैट इज अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क फॉर द कंपनी. ठीक है, मगर दे आर कॉन्सिस्टेंटली डूइंग वेल, देयर वैल्यूएशन इज फेवरेबल, द स्टॉक has had a very beautiful run up and consistent run up. They have consistently posted good numbers. Everything is absolutely perfect. Now, one particular product, which is the largest contributor to this particular company, PI Industries top line, this product is called uh, pyroxasulfone. So this pyroxasulfone has recently gone off patent in 2024. So this is our concern. लोग सोच रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट लाइक विच इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, तो यूजुअली एज आई टोल्ड लाइक ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट का प्राइस काफी गिर जाता है. ठीक है, जो रिसेंटली ऑफ पेटेंटेड हो, क्योंकि आप तो नोवेल ड्रग की तरह और प्राइस चार्ज नहीं कर पाओगे बिकॉज अदर कॉपी कैट पीपल और अदर जेनेरिक्स विल बी अवेलेबल. when the same product is available at 100 rupees, then why people will spend 1000 rupees to purchase your product? It is not possible. So obviously तुम्हारा भी price reduce करना पड़ेगा. So this is a concern for off patented drugs from the point of view of the manufacturer. तो this is quite normal and वो absorb हो जाता है, मतलब this is the common process and वो absorb हो जाता है. company strategies are well set to handle this situation. ठीक है, क्योंकि वो extra income they have earned through this. Now pyroxasulfone which has recently gone off patent, उनका मतलब there is a consensus in the market कि इसका market share में कुछ fall नहीं होगा. Why this is the like there are couple of reasons behind. One is pyroxasulfone में क्या होता है कि एक तो आपका यूएस में pyroxasulfone is used in mainly in US soybean crop. ठीक है, now pyroxasulfone is such a herbicide. It's a herbicide. It's such a herbicide. There are lots of herbicide resistant weeds are growing nowadays. ठीक है, herbicide resistant जिसमें herbicide काम नहीं करता, मगर pyroxasulfone has shown very beautiful result, outstanding result against those herbicide resistant weeds. तो जहां पे वो उसका यूजेज नहीं था वहां पे भी उसका यूजेज हो रहा है. तो यूएस सोयाबीन के अलावा अभी कॉर्न्स में भी, यूएस कॉर्न में भी ये सक्सेसफुली यूजेज हो रहा है. तो it has a growing market, and that's why the management considers that there will be no loss in the market share. That is a very good thing, or let's say very interesting thing, that के आपका despite going off patent आपका market share घट नहीं रहा है due to presence of other generic players and all. आप आपका market share रख सकते हो. So that is a very positive
side of this particular product. This is the anticipation of the management जो over the period of time समझ में आए. इसका ये जो pyroxasulfone है, it is basically sold under the brand name of Axiv. ठीक है. तो Kuimai chemical is the manufacturer, like Kuimai chemical gives the branding of Axiv, जिसके लिए PI Industries कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट. तो अच्छा, अब बात है इसका और एक रीजन है, एज आई वाज रेफरिंग, इसका और एक रीजन है वाई like the anticipation is ke it will not lose market share. It's not only growing usage of pyroxasulfone, there are other reasons as well. क्या reason है? That is you know one product, nominee gold, one product, nominee gold, which has gone off patented a few quarters back, and it has not shown any fall in the market share. That is also a silver lining. तो उसके लिए the anticipation is pyroxasulfone also will be able to maintain their market share. Those are the couple of reasons as I refer. अच्छा, PI Industries is also getting into pharma domain, as I told. Like they are basically they have actually acquired couple of companies. So just want to name those companies. So one is Therachem Research Medilab LLC, TRM, and another one is Arkema SPA. 775 crore investment के साथ PI Industries has taken over these couple of companies, and with that they are spreading their pharma wing. They are increasing their pharma manufacturing capabilities. So TRM specializes in medicinal chemistry and process R&D, particularly focusing on rare disease. It offers services and products to pharmaceutical and biopharmaceutical companies across various stages of drug development. I was referring drug development, with manufacturing and R&D facilities in India and the US. On the other hand, Archimica, a small contract development and manufacturing organization, deals in generic active pharmaceutical ingredients and intermediate products across diverse therapeutic and substance classes, including oncology, anti-ulcer, and anti-arthritics. So this is the way how PI Industries is trying to get into, or let's say increasing its hold on the pharmaceutical contract manufacturing. They are also they are also getting into some specialty chemicals, biopesticides, electronic chemicals, polymer additives, nutraceuticals, additives. So areas are very interesting. High margin products, specialty chemicals का high margin products भी देखने को मिलेगा going forward. Now over the period of time we will get to understand like how things are panning out for PI Industries, but very difficult at this point in time to take a call from my understanding. Or if you have any view, you can take your decision accordingly. I do not consider I am not giving you any recommendation with this discussion. नेक्स्ट वन इज द सुमिटोमो केमिकल. सुमिटोमो केमिकल आप सभी को मालूम है. सुमिटोमो केमिकल इज बेसिकली a company, an Indian agrochemical manufacturer, which is basically the subsidiary of Sumitomo Chemical Corporation. Sumitomo Chemical Company, SCC, Japan. Right. The parent company has many proprietary molecules which the Indian subsidiary manufactures as contract manufacturing on the basis of technology transfer, which is very important, as I told. It gives the parent a cost advantage and they distribute the chemical globally. अब ये company क्या कर रहा है? Sumitomo Chemical India
उसका जो पेरेंट के लिए जो वो मैन्युफैक्चर करता है, तो टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 2%, नॉट वेरी बिग. मगर द कंपनी इज डूइंग सम केपिक्स as per 9 months. They have already spent no, basically they have taken up a capex of 120 crore, जो पिछले 2 साल से चल रहा है, और अगले 1 साल तक ये खत्म हो जाएगा. तो दे आर बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 5 टेक्निकल ग्रेड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. ठीक है. तो तो ये जो 5 प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है, इसका डेवलपमेंट के लिए इसका डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है. एंड मैनेजमेंट सेज के by H2 FY25 these products will be are expected to be commercialized. अब ये जो 120 करोड़ का केपेक्स कंपनीज कर रहा है फॉर डेवलपिंग, दे आर सेइंग, मैनेजमेंट हैज सेड 200 to 250 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है इस 5 प्रोडक्ट्स टुगेदर. So this is Sumitomo Chemical. सारा मतलब, again, this is also not a buy, sell, hold recommendation. You take your call or take the advice from registered advisor for taking any decision. I am not responsible for any loss incurred for taking position in these companies. So that was it in terms of contract manufacturing. I hope that I have I made some made the picture little bit clear in front of you, how the contract manufacturing is panning out in India, what are the opportunities and what are the risks behind. So that's it in this video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.